हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। अपने पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के सेक्शन 1 को डिस्कस किया था। होप कि आप सभी ने देखा होगा। इफ स्टिल यू हैव नॉट सीन, यू हैव नॉट गॉन थ्रू, जस्ट गो थ्रू दैट, क्योंकि आगे का जो सेक्शन है वो बेसिकली हमारे फर्स्ट सेक्शन से रिलेट करता है। फर्स्ट सेक्शन के लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको कन्विंस किया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के लिए, और फाइनली द कांग्रेस had adopted the non-cooperation Khilafat movement program in its Nagpur session in December 1920. So now the beginning of the non-cooperation Khilafat movement. The movement began in January 1921। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, इसकी शुरुआत जनवरी 1921 में। जो हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर, they had enthusiastically responded to the call of Mahatma Gandhi for non-cooperation, for attaining Swaraj. But the word Swaraj, the term Swaraj, it was taken by them in their own ways. अपने अपने तरीके से उन्होंने इस टर्म को, इस स्वराज को, जो वर्ड था, उसको उन्होंने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, डिफाइन किया। सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट इन टाउन्स। मूवमेंट इन टाउन्स, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इस सेक्शन से बनता है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च या बिगेन? जनवरी 1921। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्प्रेड इन टाउन्स? किस तरह से ये टाउन्स में, इंडियन जो हमारे सिटीज थे, टाउन्स थे, किस तरह से ये स्प्रेड हुआ? तो इफ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट इन टाउन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टाउन्स the movement began with the participation of the middle class people। यानी कि हमारे टाउन्स और सिटीज में जो बेसिकली हमारा मूवमेंट की जो शुरुआत थी, वो उसमें किसका पार्टिसिपेशन था? मिडिल क्लास लोगों का। चूंकि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे बनेगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि हम सबसे पहली स्टेज में क्या करेंगे? सरेंडर ऑफ ऑल ऑर्डिनरी टाइटल्स। जितने भी हमारे ऑनररी टाइटल्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे, गिव अप कर देंगे। सेकेंड स्टेज जो उन्होंने कहा कि हम जो है, जो भी हमारे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बाइकआउट करेंगे, फॉरेन गुड्स का हम बाइकआउट करेंगे। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड। Thousands of students and teachers
and teachers left the government schools. Government schools को उन्होंने छोड़ दिया. Lawyers stopped legal practices and the legislative council elections were boycotted in most of the provinces except in Madras. Here the Justice Party जो एक नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, had decided to participate in the election as its leader felt it as a way for political empowerment of the low caste group. यानी उनको ये लगा कि लो कास्ट जो हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनके कुछ मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं इन इलेक्शंस में, तो अल्टीमेटली इनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा और इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के थ्रू वो क्या कर सकते थे, सोसाइटी के अंदर अपने स्टेटस को इंप्रूव कर सकते थे, अपनी लिविंग को बेटर बना सकते थे. सो दिस वाज द रीजन दैट व्हाई द जस्टिस पार्टी हैड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. अगर हम इस मूवमेंट के इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं तो व्हाट वाज दैट, what do we find? That foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट कर दिया गया और इसकी जगह पर खादी का प्रमोशन किया गया. लिकर शॉप्स इनको पिकेट किया गया. दैट मीन्स द सत्याग्रहीज दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप सेलिंग द फॉरेन क्लोथ्स और यू कैन से द फॉरेन गुड्स as well as the liquor shops and requesting the buyers not to buy these goods or the liquor. इसको हम क्या बोलते हैं, पिकेटिंग. इसका रिजल्ट क्या हुआ, द इंपोर्ट ऑफ
the import of foreign cloth reduced to half between 1921-22, declining its value from 102 crore rupees 102 crore to only 57 crore, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो घटकर 102 करोड़ से केवल और केवल 57 करोड़ है। At various places, कई जगहों पर the traders and merchants refused to trade in foreign goods or to finance it, उसको फाइनेंस करने से मना कर दिया, यानी कि फॉरेन गुड्स के ट्रेड को फाइनेंस करने से उन्होंने मना कर दिया या उसमें ट्रेड करना ही उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, चूंकि हमारा फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया गया था, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया था, तो व्हाट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दैट? द इंडियन इंडस्ट्रीज गॉट अ बूस्ट फ्रॉम द मूवमेंट। तो फोर्थ इंपैक्ट हम देखते हैं, द इंडियन इंडस्ट्रीज got a boost from this movement, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको इस मूवमेंट से फायदा हुआ। दे कुड नाउ एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री। लेकिन ये जो हमारा मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये हमारा धीरे धीरे क्या हो गया? स्लो पड़ गया इन टाउन्स एंड सिटीज। रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट, इसके मेन रीजन क्या थे? पहला, खादी वॉज एक्सपेंसिव compared to the mill made imported cloth। अब चूंकि इंडिया के ज्यादातर लोग, सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री दे वर पुअर, दे कुड नॉट अफोर्ड खादी। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल इन द country were poor, they could not afford खादी, और वापस उन्होंने सस्ते इंपोर्टेड क्लोथ को यूज करना शुरू कर दिया। अनदर रीजन, इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी था कि ऑल्टरनेटिव, जो हमारे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जगह पर ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाता। फॉर द सक्सेस ऑफ मूवमेंट,
movement alternative national institutions were required, which were slower to come, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बहुत धीरे धीरे सेटअप हो रहे थे. Therefore, the students and teachers trickled back to government schools and lawyers once again took up practices in law courts. ठीक है, वो वापस उन्होंने लॉ कोर्ट्स को हेडेड बाय द यूरोपियन जजेस उनको वापस ज्वाइन कर लिया. तो ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से हमारे 3 क्वेश्चन यहां पर निकल कर आते हैं. पहली चीज, हाउ वॉज द मूवमेंट स्प्रेड इन टाउन्स एंड सिटीज. दूसरा, what were the economic impacts of the non-cooperation movement. non-cooperation movement के impact क्या थे, ये points आप लिखेंगे. और if the question comes that why did the non-cooperation खिलाफत movement slow down in towns and cities, तो उसका आंसर this one. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मूवमेंट इन द कंट्री साइड, यानी कि हमारा सिटीज से ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ कहां पर, टाउन्स में. टाउन्स से हमारा कहां गया, ये हमारा मूवमेंट स्प्रेड हुआ टुवर्ड्स द विलेजेस. ठीक है. और विलेजेस में इस समय जो हमारे पेजेंट्स या जो हमारे ट्राइबल मूवमेंट्स थे, उन मूवमेंट्स को इसने अपने फोल्ड में, यानी कि अपने अंदर इसने समेटने की कोशिश की. यानी कि कांग्रेस लीडर्स ने ये कोशिश किया कि भाई जो हमारे पेजेंट्स के या ट्राइबल्स के जो मूवमेंट हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसको नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट कर लिया जाए. So here we are going to discuss about the movement in the countryside. Movement in the countryside. ठीक है. तो from towns and cities this movement reached to the countryside, and within its fold it tried to bring within its fold the movements, the local movements of peasants as well as of the tribals. तो सबसे पहले हम यहां पर मूवमेंट डिस्कस करते हैं. peasants movement in Awadh. peasants movement in Awadh. अब अवध में जो हमारा मूवमेंट था, दिस मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र. बाबा रामचंद्र, he was a sannyasi and he served as an indentured labor in Fiji. indentured labor क्या होते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते थे, जिनसे हमारे
जो उस समय के जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे, यूजुअली वो क्या किया करते थे कि इंडिया से अपने एजेंट्स के थ्रू वो मजदूरों की भर्ती किया करते थे और उन मजदूरों को के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। 2 साल 5 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे और उनको इंडिया से बाहर सीलोन यानी कि श्रीलंका या कैरिबियन आइलैंड्स या फिजी या सुरिनाम, इन इन लोकेशंस पर उनको भेज दिया जाता था काम करने के लिए। और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था या तो वो वापस लौट आते थे या वो परमानेंटली वहीं सेटल हो जाते थे। एंड दिस इज द रीजन, जो कुछ मजदूर ऐसे थे जो वहीं पर हमारे सेटल हो गए। जैसे वेस्ट इंडीज में आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे नेम अगर आप उनके क्रिकेट टीम में देखें तो दे आर रिजेंबलिंग टू द इंडियन नेम। तो एक्चुअली दे आर द डिसेंडेंट ऑफ दोज इंडियन laborers who had migrated from India to work on plantations located in those countries and permanently settled over there. ठीक है, तो बाबा रामचंद्र जो है ऐसे ही एक इंडेंचर्ड लेबर थे जो फिजी में जिन्होंने काम किया एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिर वो वापस इंडिया आ गए, सन्यासी हो गए। ठीक है, दिस मूवमेंट was against oppressive landlords और तालुकदार्स। ये जो हमारे पेजेंट्स थे, इनका जो मूवमेंट था वो किसके खिलाफ था? अब ऑपरेसिव तालुकदार्स या लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। रीजन क्या था? रीजन ये इनके खिलाफ मूवमेंट क्यों कर रहे थे? पहली चीज, द पेजेंट्स वर मेड to pay exorbitantly high rents। उनको बहुत ज्यादा रेंट पे करना पड़ता था। यू नो कि ब्रिटिश ने हमारा जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और जमींदारी सिस्टम में बेसिकली द लैंडलॉर्ड्स दे वर द ओनर ऑफ द लैंड और वो ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू वो फार्मर से कलेक्ट करना पड़ता था, करते थे, करना पड़ता नहीं था, वो करते भी थे। दूसरा, और ये फार्मर्स जो है वो अपने लैंड को तभी तक कल्टीवेट कर पाते थे जब तक कि वो उस लैंड रेवेन्यू को पे किया करते थे, यानी कि वो एक तरह से किराएदार थे, वो पेइंग द रेंट्स। they were made to perform बेगार। उनको बेगार करना पड़ता था। बेगार का मतलब they had to work without any payment of wages। And thirdly, they were frequently evicted from their lands। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारे 3 उनकी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया या अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया। व्हाट वर देयर डिमांड्स? तो उनकी डिमांड्स क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। वो चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार। ठीक है, वो ये चाहते थे कि भाई लैंड रेवेन्यू को क्या कर दिया जाए? कम किया जाए।
बेगार को खत्म किया जाए, ठीक है। एंड दे वर वांटेड ओनरशिप राइट over the land which they were cultivating. ठीक है। At several places they even organized नाई धोबी बंद against the oppressive landlords to deny them the services, even the services of a barber or a washerman. ठीक, तो ये उनकी मेजर डिमांड्स थी। ड्यूरिंग 1920 जून 1920 जवाहरलाल नेहरू toured the villages of the Awadh region and tried to understand their grievances. उनकी परेशानी को उन्होंने समझने की कोशिश की। In October 1920, अवध किसान सभा was formed with जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र and others as its leaders. ठीक है। जून 1920 जवाहरलाल नेहरू ने पूरे उस इलाके के जो गांव थे उनका उन्होंने दौरा किया, लोगों के किसानों की परेशानी को समझने की कोशिश की। अक्टूबर 1920 अवध किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के साथ साथ और भी बहुत से लोग थे जिनको इसका लीडर बनाया, इसकी कमान दी गई। और विद इन अ मंथ इस अवध किसान सभा की उस रीजन में करीब 3000 ब्रांचेस या हम कहें इसकी शाखाएं जो हैं वो खुल चुकी थी। एट द टाइम व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज बिगिन, the Congress tried to integrate the Awadh peasants movement within the fold of the non-cooperation खिलाफत में। उन्होंने कोशिश किया कि ये जो peasants का मूवमेंट है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट हो जाए, लेकिन दिस मूवमेंट
proceeded in a manner that was difficult for the Congress to support. यानी कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये कोशिश किया कि इस मूवमेंट को इंटीग्रेट किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, लेकिन ये मूवमेंट हमारा इस तरह से स्प्रेड हुआ कि कांग्रेस जो है वो उस तरीके को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती थी। यानी कि आप समझ सकते हो कि महात्मा गांधी ही वॉज स्ट्रिक्ट टू द आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, लेकिन ये जो हमारा मूवमेंट था it turned violent at different places. So when the movement began, peasants attacked over the landlords' houses to confiscate the food grain stocks बाजार्स were looted, बाजार्स को उन्होंने लूट लिया। तीसरा, यानी कि यहां पर पहली चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स के जो घर थे उन पर उन्होंने अटैक किया और वहां पर जो फूड ग्रेन जो सप्लाईज थी उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, उसको कन्फिस्केट कर लिया, बाजार्स को उन्होंने लूट लिया। ठीक है। लीडर्स asked the peasants to stop the payment of land revenue। और इस बात के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के नाम का सहारा लिया। उन्होंने किसानों से ये कहा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई भी लैंड रेवेन्यू हमको लैंडलॉर्ड्स को पे नहीं करना। ठीक है। तो इस तरह से देखिए तो यहां पर हमारा कंट्री साइड में जो हमारा पेजेंट्स मूवमेंट है अवध रीजन के अंदर, वो बेसिकली हमारा उस तरीके से आगे बढ़ा जिसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर सकती थी, यानी कि इट वॉज टर्न वायलेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हमारा कंट्री साइड में हम बात करते हैं, दैट वाज द ट्राइबल पेजेंट्स मूवमेंट इन द गोडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यहां पर हमारा मूवमेंट एक गुरिल्ला मूवमेंट था। ठीक है। सो इट वॉज अ गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है। यानी कि इस मूवमेंट में बेसिकली क्या है कि हिट एंड रन। रीजन क्या था? रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट enacted the forest laws in 1870s restricting
restricting the tribal peasants from an access to forests. ठीक है, यानी कि यहां पर इस रीजन में जो हमारे फर्स्ट एरिया था, उस फॉरेस्ट एरिया में वहां पर उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को इंपोज कर दिया और इससे उन्होंने ट्राइबल पेजेंट्स जो थे उनके ऊपर एक रोक लगा दी, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उन पर, ठीक है, फ्रॉम हैविंग एन एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्स. They could not graze their animals, graze their cattle, collect fuel wood or forests from the forest. वो फॉरेस्ट एरियाज में अपने कैटल को ग्रेज नहीं कर सकते थे और ना ही वो फ्यूल वुड या फ्रूट्स जो हैं वो फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते थे. ठीक है, तो ट्राइबल्स ऑब्वियसली उनको ये लगा कि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे न केवल उनकी लाइवलीहुड को छीन लिया है बल्कि उनका एक जो ट्रेडिशनल राइट है ओवर द फॉरेस्ट उनसे भी उनको डिनाई कर दिया गया है. एंड when the tribals in the region were forced to provide begar for road construction, they rose into revolt. अब ये जो हमारे ट्राइबल्स थे, इनका जो लीडर था, ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फिगर. दे वर लेड बाय द ट्राइबल्स were led by Alluri Sitaram Raju. अब ये अलूरी सीताराम राजू ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर थे. वो कहा करते थे दैट ही हैड सम मिराकुलस पावर्स. वो कहते थे कि उनके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, कुछ अद्भुत शक्तियां हैं. वो एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सही भविष्यवाणी कर सकते हैं. वो लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. दैट मीन्स ही कुड हील द पीपल. एंड मोर ओवर ही यूज्ड टू क्लेम, वो ऐसा भी कहा करते थे कि वो बुलेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि वो गोलियों का भी उन पर कोई भी असर नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो अलूरी सीताराम राजू थे वो ये कहा करते थे कि उनके पास मिरेकुलस पावर्स हैं, जैसे वो एग्जैक्टली सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सही भविष्यवाणी कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में. वो लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, वो लोगों की बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ, ठीक है, वो बुलेट्स
यानी कि गोलियों की बौछारों में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। लोग अलूरी सीताराम राजू को इनकारनेशन ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। ठीक है, तो राजू अलूरी सीताराम राजू used to claim to have some miraculous powers. ठीक है, अलूरी सीताराम राजू इसके साथ साथ ही वॉज टॉक्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। अलूरी सीताराम राजू जो है वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में भी बात किया करते थे। ठीक है, और अपने जो लोग थे, जो अपने ट्राइब के जो लोग थे, ही टॉक्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। वो अपने लोगों से कहा करते थे कि वो खादी पहने और ड्रिंकिंग ना करें, गिव अप लिकर, शराब ना पिए। He asked his people to wear khadi and gave up drinking. But he was not agreed with Mahatma Gandhi's perception that the Swaraj would come through non-violence. उनका ये मानना था, he believed that the British could be drive out from India only by force. तो इसलिए जब हमारा ट्राइबल मूवमेंट शुरू हुआ, many of the police officials they were killed. The tribals attacked the officials, the British officials and kill them. Finally, Raju was arrested and in 1924 he was executed. Finally 1924 में उसको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, so this was how the tribal peasants movement came to an end with the execution of Alluri Sitarama Raju. But we know that he had inspired his people to such an extent that he had become, though he was sacrificed his life, but he had become a real hero among his people. Still, in the local folklores, we can find his mention. आज भी हम ट्राइबल्स जो हैं उस एरिया के, उनके बीच में अलूरी सीताराम राजू से रिलेटेड स्टोरीज को सुन सकते हैं। He had become the part of their folklore.
नेक्स्ट, स्वराज इन द प्लांटेशंस। स्वराज इन द प्लांटेशंस। देखिए, जो हमारा ये वाला जो टॉपिक था, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, या हम बात करें मूवमेंट इन द कंट्री साइड, तो इसमें एक तो हमारा अवध पेजेंट्स का कई सारे क्वेश्चंस जैसे हमारे छोटे छोटे भी बन सकते हैं, जैसे हु वाज द लीडर ऑफ द पेजेंट्स मूवमेंट इन अवध, बाबा रामचंद्र। ठीक है, फिर हमारा व्हाट वर द मेन रीजंस, उसके मेन रीजंस क्या थे। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं आप, वही मूवमेंट हमारा ऑपरेसिव जमींदार्स के खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ठीक है, दे वर डिमांडिंग exorbitantly very high land revenue या rents. The peasants, they were forced to perform begar, और साथ ही साथ they were having no rights over the land. They were frequently evicted from their lands which they were cultivating. डिमांड्स क्या थी उनकी? ऑब्वियसली वी हैड डिस्कस कि भाई उन्होंने कहा कि भाई एक तो लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई बेकार को एबोलिश किया जाए, और तीसरा लैंड्स जिस पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, और कई जगहों पर नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो एक मार्क का क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का, मैं आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट वाज द नाई धोबी बंद। ठीक है, हमारा ये भी पूछा जा सकता है व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पेजेंट्स इन द अवध रीजन। फिर हमारा अवध किसान सभा का फॉर्मेशन कब हुआ, फिर हमारा मूवमेंट का पूरा इवेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पेजेंट्स मूवमेंट इन द अवध रीजन। इसी तरह से ट्राइबल्स मूवमेंट में जब हम आते हैं तो ट्राइबल मूवमेंट का इसका कॉज, हु वाज द लीडर, उन पर शॉर्ट नोट भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक से तैयार करना है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज इन द प्लांटेशन। अब जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स in Assam, Swaraj meant the freedom to move in and out of the plantation area, without any restriction. ऐसा क्यों? Actually, what happened in 1859? The government passed the Inland Immigration Act. इस एक्ट में ये कहा गया कि जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स हैं, they could not move in and out of the plantation area at their will. If they were wanted to leave the plantation, they were required the permission of the plantation owner, or plantation owner European होते थे. Such a permission was rarely granted to them. ठीक है, so this is what we find. This act restricted the plantation workers
within the plantation area, they could not move out of the plantation without the permission of the plantation owner. And such a permission was really granted. ठीक है, तो इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या है कि वो फ्रीली क्या कर पाएंगे, प्लांटेशन एरिया से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो अंदर बाहर जा सकेंगे. ठीक है. सो when they heard about the movement, thousands of them left plantations and moved to their villages. वो अपने गांव की तरफ चलती है. उनका क्या सोचना था कि भाई गांधी राज आ रहा है, महात्मा गांधी का राज आ रहा है, and they would be getting lands for cultivation within their own villages. ठीक है. They believed that the Gandhi Raj was coming, and they would get lands for cultivation within their own villages. But it was their hard luck. Hard luck क्या था? Due to the strike of the railways and the steamers, they could not reach their homes. The police caught them on the way, and they were once again enclosed or restricted within the plantation. ठीक है. So due to the strikes of railways and steamers, they could not reach their homes. They were caught by the police and sent back to plantation. ठीक है. तो this was what happened to the plantation workers. उनके लिए स्वराज का मतलब बिल्कुल डिफरेंट था. आप देखो, किसानों के लिए, जो अवध रीजन में जो किसान हैं, उनके लिए स्वराज का मतलब हाई लैंड रेवेन्यू से मुक्ति. ट्राइबल प्रेजेंट्स के लिए
स्वराज का मतलब एक्सेस ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्स, और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब फ्रीडम टू मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लांटेशन एरिया. So this is what all about the second section of this chapter. Keep on revising, go through the question, क्योंकि ये भी हमारे क्वेश्चन एक इसमें से बन जाता है. ठीक है, एक हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के ऊपर बन सकता है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, व्हाट वाज या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांटेशन वर्कर्स परसेप्शन अबाउट स्वराज. ठीक है, या उनके मूवमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट. ठीक है, सो कीप ऑन रिवाइजिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू एंड हैव अ wonderful day ahead. Keep on revising. Once again, I would like to say only this. Thank you.